तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स होते हैं एंड स्पीड टाइम ग्राफ्स होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या देखना होता है? दिस इज ऑफ रेस्ट, दिस इज ऑफ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, दिस इज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, और ये डिक्रीजिंग स्पीड होता है। इसमें फर्दर ऑन हमारे पास क्या होता है कि इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है? नेगेटिव। इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अब जो ये दो ग्राफ हैं, these two graph is common in both speed time and distance time graph। स्पीड टाइम ग्राफ में ये शेप किसको शो कर रही होती है? कांस्टेंट स्पीड को। एंड इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। एंड ये शो कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड को। एंड इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। फर्दर ऑन द स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वी नीड टू कीप टू थिंग्स इन आवर माइंड के ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास? Gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1। एंड ग्रेडियंट को हम m से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड m ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड। एंड m ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में क्या देता है? एक्सेलरेशन। एंड why is that? बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे क्या होता है? डिस्टेंस। और x एक्सिस पे क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड। सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ में y एक्सिस में क्या होता है? स्पीड। एंड यहाँ पे टाइम ही होता है, तो स्पीड ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन। अब जो फर्दर पॉइंट हमें अपने जहन में रखना है इन कॉन्टेक्स्ट टू दीज, के एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ स्पीड और डायरेक्शन। इफ ईदर ऑफ इट इज चेंजिंग तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, इफ नन ऑफ इट इज चेंजिंग तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो whenever an object is moving in a circle, तो उसकी एक्सेलरेशन कहाँ होती है? ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसकी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। बट स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसी केस में वर्क डन भी क्या होता है? जीरो। बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। एंड द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, उसको क्या डिफाइन करते हैं? Centripetal force. It always acts towards the center. And it is the force necessary to keep an object moving in a circle. इसमें further on the points that we need to keep in our mind is कि going upwards, speed decreases, and at maximum height, v is equals to zero, speed and acceleration भी क्या होगा? Obviously zero. And acceleration is equals to g is equals to negative while going up. Downwards आते हुए increases, v is maximum
just before touching the ground, and acceleration is equals to g is equals to positive. Okay, फिर हमारे पास next portion that you asked for was momentum. Momentum से पहले एक दफा वेक्टर्स को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं. Whenever two vectors need to be added, the only thing that we need to keep in our mind is head and tail. When this is achieved in a vector, we can draw a vector such that its heads coincide with the head and tail coincides with the tail. For example, we have two vectors drawn like this. They are tail to tail. What we have learned is we need to make it head to tail. So whenever we draw a vector parallel to it, we always get head to tail, and then a resultant vector is drawn such that head coincides with the head and tail coincides with the tail. We can also redraw this vector in front of it. In either case, we'll get the same result. Now, the vector which is at a certain angle from the resultant is considered as the x component, and we add a cos of theta trigonometric ratio with it. And the one which is making an angle of 90 is always considered as the y component. So what we need to keep in our mind is the one which is making an angle theta will always be the x component. Doesn't matter it's horizontal or not. Similarly, the one which is making an angle of 90 is always be the vertical component. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मीनिंग होता है कि whenever I'm at this point, we know that I've traveled this distance through x and this distance through y to reach to that point from the origin. So each vector is made from its component. Up till जैसे until unless कि वो अगर vertical होगा तो उसका x component क्या होगा? 0. अगर वो horizontal होगा तो उसका y component क्या होगा? 0. ये कुछ obvious चीजें होती हैं जो हमें knowledge में होनी चाहिए. Next is कि magnitude of a vector यानी हम क्या करते हैं? Vertical component plus horizontal component. I'm all saying it as horizontal and vertical because we यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हमने सिंपली दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर लेके उनका मैग्नीट्यूड ले लेना होता है. ठीक है. लेकिन जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो होती है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के. तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है एंड हॉरिजॉन्टल कौन सा है. हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वर्टिकल कंपोनेंट ज़ैनब? जवार. मरियम, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वर्टिकल कंपोनेंट? मैं अब आप लोग then comes the momentum.
It is a property of the body due to which due to its motion. Quantum is given as P is equals to mv and its unit is kilogram meters per second and its vector in nature. Then law of conservation of momentum. It tells us that momentum of two bodies before and after pulling in remains constant. But the only thing that we need to keep in our mind is the system should be isolated, which means no external force is going to act on the body. And also one another thing needs to be kept in mind that the collision of the two bodies will be elastic. And elastic means the kinetic energy of the system remain conserved. And somehow it is associated with the isolated system because जब कोई external forces act नहीं कर रही होती तो इसमें यही सिस्टम होता है. The law of conservation momentum में we considered कि if two bodies are approaching each other and they have a mass of m1 and m2, the velocity of v1 and v2. So we'll put a negative sign in between them. The momentum would be m1 v1 minus m2 v2. If the two bodies are going in the same direction, again with the mass of m1 and m2 and v1 and v2, we'll write their momentum as m1 v1 plus m2 v2. So if after collision they continue in the same direction, obviously during collision they will not lose any mass. The mass would remain same and the velocities will now be just to show that these are the velocities after collision. So it would be written as m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Since they were going in the same direction, we added plus sign. If they were going in the opposite direction, we would add a negative sign because उन्होंने अपनी direction को change किया है इस वजह से. तो law of conservation of momentum क्या discuss कर रहा था? m1 v1 plus m2 v2, which is the momentum is equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. These are the momentum of two bodies before collision, and these are the momentum of two bodies after collision. इसमें एक और फॉर्मूला भी ऐड होता है कि if the two bodies stick together after collision, तो बिफोर मोमेंटम तो वही रहेगा
क्योंकि अब दे हैव स्टिक टुगेदर तो उनकी फाइनल वेलोसिटी सेम होंगी, तो हम उसको डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है रिकॉइल का। रिकॉइल में हमने ये ध्यान रखना है कि अगर दिस इज माई मोमेंटम ऑन अप्रोचिंग द बॉडी, दिस वुड बी माई मोमेंटम अपॉन रिकॉइल। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं?